Hello friends, my name is Sanjay Kumar Sharma. Today we will discuss the basics of microprocessor. This topic is very important to understand the concept of the microprocessor and microcontroller. Basically, this is the foundation of the microprocessor. If you understand these concepts, then you can very easily understand the microprocessor. To understand the concept of microprocessor, the prerequisite knowledge is digital electronics because totally microprocessor is based on the digital electronics and analog electronics, but digital electronics is more important. For example, if you understand the concept of flip-flop, counter, memory, then you can easily implement in the microprocessor because all the block diagram are related to counter, register, memory, flip-flop, adders, logical operations, arithmetic or operation. These all blocks are related to the digital electronics. So prerequisite knowledge is digital electronics. The first topic is the basic block diagram of computer. Basic block diagram of computer. In any computer, four mainly blocks are there. One is input device, output device, memory, and microprocessor. If you compare this diagram or this computer or PC or laptop with a human body, then you can easily understand the concept of input, output, memory, and microprocessor. For example, if I ask one question to you, suppose what is the flip-flop? Then after some time you will give the answer. But whatever I am said, I ask the question, what is the flip-flop? You're listening this question, this information will go to your brain, then brain analysis with your previous knowledge related to the flip-flop. Then after some time you will give the answer. Similarly, here input devices are there. Your ear will work as a input devices. Similarly, if I am giving the question paper to you, then questions you will scan your eyes. That means your eyes will act as an input devices. Similarly, here input devices in any computer you know very well, keyboard. Keyboard will act as an input devices. Mouse will act as an input devices. Logistic tape, this is also very important. Logistic tape will also work as an input devices. Logistic tape means it's a kind of tape. Suppose 8-bit data is there, then if you want to store the 1, then whole is there. If you don't want to store the 1, means you want to store the 0, no whole is there. So data will store in the form of whole and no whole, and this tape will move through the two pins. One pin is bottom side, one pin is from other side, and both the pin are connected to the supply through the resistance. So whenever any hole is there, the circuit will complete, current will start flowing through the resistance, voltage you will obtain across the resistance, that is equivalent to 1. But if no hole is there, no connection will be possible, so this is equivalent to 0. So if you stored previously the data into the logistic tape, then this tape will move to the some circuit through the some circuit. Then you can feed the data to the microprocessor. So it also act as an input devices. So whatever information you want to send, that information you will send through these input devices to the microprocessor. Microprocessors, some of the book right here this mic in the place of microprocessor CPU. Naturally, there's some difference there. We will discuss little bit later. But microprocessor analysis the thing. For example, suppose user want to add the 0 to plus 0 to. Understand? So before starting,
this user will make a program and store it into the memory. What is the meaning of the program? We will discuss a little bit later. But then now you understand what is the meaning of the program. Means program is a group of instruction. So for addition, user will make a program. Then this program will store into the memory. Now, whenever this data will feed or command will feed to the microprocessor, then microprocessor find out the program from the memory and execute this program. And after execution, whatever result will be there, that means 04, 04, it will send to the output devices. The end result will display. So naturally, the will be the output devices in a previous example, in layman example. Suppose I ask the one question, what is the flip flop? Then after some time you speak the answer. That means your mouth will act as a output devices. Or suppose I give the one question paper to you, then you can write your answer on the answer. Similarly, here output devices may be monitor, then result will be displayed on the monitor. Maybe printer will also act as an output devices. Logistic tape will also act as an input as well as output devices, because you can collect the data on the logistic tape, or you can store the data in the form of whole and no hole. And this whole no hole will be result of input, whatever input you will feed into this thing. Here this important part is the memory. Before starting our discussion to the memory, I just ask the one question. For example, the prerequisite knowledge of this microprocessor is digital electronics. So you expect, maybe I will ask the question related to the digital electronics, then all the knowledge, whatever you have the knowledge related to the digital electronics, it will be in the primary memory. Maybe I ask the one question, what is the flip flop? Immediately you will give the answer in a fraction of second. But at the same time, if I ask the question, uh, for example, in the 2019, third Sunday of August, what happens? Maybe you will not give the answer instantly. Maybe you require the some time. Why? Because this information is not yet required. It is dumped somewhere. Dumped somewhere means whatever the information is not required. Maybe you can scan your memory, and after 1 day or 2 day you will get the answer, or maybe after 3 or 4 days you will get the answer. So whatever the data is not presently required, it will be dumped somewhere else. Similarly, here memory is also two type. One is the primary memory. Second is the secondary memory. Primary memory is directly interact with the microprocessor. The important point is, like you, if I ask the what is the flip flop, immediately you will give the answer. That means this is access time. Access time means after applying the input, after I ask the question, whatever time you are taking to give the answer, that is your access time. Similarly here, memory is a group of registers, or register is a group of flip flop. You already study in the digital electronics. Flip flop is a bistable multivibrator which have the two stable state, either 0 or 1. 0 or 1 can store in the flip flop, you know very well. So memory is a group of register. One register in a technically in a microprocessor known as a memory location. Suppose this is the memory. This is the first memory location. This is the second memory location. This is the third memory location. This is the fourth memory location, and so on.
Suppose I am storing the data here, 05H, for example, 05H. Now the question is, how the microprocessor will know where you store the data? Definitely, which register is used to store the data? First register, second register, or third register, or we can say that first memory location, second memory location, or third memory location. Similarly, suppose whole class is there. Just give the one example also. All the students are sitting. If I want to interact the particular one student, how I will interact? Naturally, name is required. I call the student with his name, right? So name is basically the address. Similarly, here every memory location have the some address like your postal address where you are living. Similarly, here data is residing in the particular register or particular memory location. So the address is required. So microprocessors send the address across the memory, and after some time memory give the data. So the proper definition of access time is after applying the address, whatever time is taken by the memory is known as the or memory or IO device or any device. That time is known as the access time. The speed of the primary memory is very fast comparatively to the secondary memory. The point is here, microprocessor speed is very fast. Microprocessor speed is very fast, and memory speed is very small comparatively to the microprocessor. So naturally, some mismatching in the speed will be there. Like I just asked the I give the just one layman example. सपोज मैं और आप दौड़ने गए, मैंने कहा हम दोनों साथ साथ रन करेंगे, लेकिन आपको मेरे साथ दौड़ते समय मेरे साथ ही रहना है, मेरे से आगे नहीं दौड़ना है, मेरे साथ साथ दौड़ना है, and my speed is a little bit less comparatively to you. So what will be the restriction? Your speed is still very high, but you are restrict with me, so your speed will be limit because of me. Similarly, here microprocessor speed is very high, but due to the speed limitation on the uh, access time, the memory speed is very slow. Memory speed is very slow comparatively to the microprocessor. So overall operation is limited because of the lack of speed of the memory. If you compare the speed of the primary memory and secondary memory, primary memory speed is very fast compared to secondary memory. Primary memory, like all the semiconductor memory are primary memory. Semiconductor memory. Semiconductor memory, RAM, ROM, उसमें भी आपको पता ही होगा, ROM में क्या होगा, EEPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल में भी दो पार्ट हो जाएंगे, आपको पता होगा, E2PROM एंड अल्ट्रावायलेट EEPROM. रैम भी दो तरह का होगा, डायनेमिक रैम एंड स्टैटिक रैम. So the point is here, all the semiconductor memory, flash memory is also very fast compared to secondary memory. Cache memory, cache memory is also very fast compared to secondary memory. The speed of these memory is very fast compared to the secondary memory. Secondary memory कौन सी हो सकती है? हार्ड डिस्क, फ्लॉपी हो सकती है, यस ऑफ कोर्स, फ्लॉपी ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क और फ्लॉपी ड्राइव,
ड्राइव में तो चलेगा ही, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, ऑफ कोर्स पेन ड्राइव भी secondary memory हो सकती है. The utility of the secondary memory is whatever data is not currently required, it will be dumped into the secondary memory, right? And whatever the data is presently required, that will store into the primary memory. So primary memory directly interact with the microprocessor. If data is not in the primary memory, then data will come from the secondary memory to primary memory, then primary memory to the microprocessor. Now the point is here, you will store the program into the secondary memory, primary memories, semiconductor memories. Then microprocessor one by one fetch the instruction from the memory. Fetch मतलब निकालना, बाहर निकालना. Fetch the instruction from the memory. Now microprocessor understand what exactly user want to be performed, then execute this instruction, and after execution, when whole program will execute, the result you will result will obtain, and result will transfer to the output device, and it will display on the monitor or printer or logistic tape, whatever you are decided as a output devices. So the problem is in primary memory speed is very fast, but costing is very high. If you want to purchase the एनी लैपटॉप, तो आपको याद होगा कितना रैम, 4 GB रैम, 6 GB रैम, 8 GB रैम, बट हार्ड डिस्क 1 TB. If you just double the RAM, the costing is just double. Costing of RAM is just double. But secondary memory cost is very less compared to primary memory, but speed is very slow. Speed is very slow. So in any computer system, both the memories are available. Cache memory is also fast compared to the semiconductor memories. Semiconductor memories. So the movement of data is also possible. Like suppose this is the cache, this is the secondary memory, sorry primary memory, semiconductor memory बोल सकते हैं इसको, semiconductor memories. This is the secondary memory, मतलब हार्ड डिस्क बोल सकते हैं. तो interaction, maybe cache will directly interact with the microprocessor. Maybe sometime data will transfer from semiconductor memories to cache memory, or directly from semiconductor memories to the microprocessor, and flow from hard disk to the semiconductor, or semiconductor to the maybe cache, or maybe directly to the microprocessor. So this is the basic block diagram of any computer. Any computer have the mainly four devices: input devices, output devices, memory and microprocessor. माइक्रोप्रोसेसर के साथ ये जितनी भी डिवाइसेस लगी हुई हैं एडिशनल, इनको टेक्निकल टर्म हम बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस. नेचुरली इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें लगी होंगी, ये तो बेसिक बिल्डिंग में है. पेरिफेरल डिवाइसेस, पेरिफेरल डिवाइसेस, इट इज जनरलाइज नहीं. पेरिफेरल इनपुट भी हो सकता है, आउटपुट भी, मेमोरी, सबको पेरिफेरल डिवाइसेस बोलते हैं. पर पर्टिकुलरली बात करनी है, डेफिनेटली सम इंटरफेसिंग चिप विल आल्सो देयर, ड्राइवर्स आर देयर, बहुत बहुत सारा कुछ होगा. बट अगर एक बेसिक माइक्रोप्रोसेसर सिस्टम की बात करें, तो मेनली चार ब्लॉक्स होंगे: इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड मेमोरी. ओके फाइन. नाउ वी कम ओवर टू द नेक्स्ट टॉपिक. Next part is, which is very important, what is the meaning of the bus? Bus is a group of wire, bunch of wire, which carry the information regarding the address, data or control signal. बस क्या है? bunch of wire, group of wire है, जिसमें वायर्स कितने होंगे? जितनी बस की विड्थ होगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं बस का विड्थ 16 बिट है, तो 16 पैरेलली वायर होंगे, सिंपल वायर. अगर कहता हूं बस का विड्थ 8 बिट है, देन 8 वायर्स आर देयर. तो बस इज ए ग्रुप ऑफ वायर और बंच ऑफ वायर विच कैरी द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एड्रेस, डेटा और कंट्रोल सिग्नल. बस तीन तरह की होती है माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड सिस्टम में. वन इज एड्रेस बस, डेटा बस
एंड कंट्रोल बस। यहाँ एक डायग्राम में आप देखो जरा, this is the 8085 microprocessor, this is the memory, this is the input devices, this is the output devices. Whenever you want to retrieve the content, or retrieve मतलब fetch the content, बाहर निकालना चाहते हैं अगर, when you want to retrieve the content from the memory or input devices, कहीं से भी कोई इन कहीं से भी कोई डेटा अगर आप बाहर निकालना चाहते हैं, suppose you want to retrieve the content from the memory, then definitely as previously said the address is required. कौन सी मेमोरी लोकेशन से डेटा निकालना चाहते हैं? फर्स्ट मेमोरी लोकेशन से। मेमोरी लोकेशन मैं फिर दोबारा रिमाइंड करा रहा हूं, मेमोरी लोकेशन मींस रजिस्टर, पहला रजिस्टर, क्योंकि मेमोरी इज ए ग्रुप ऑफ रजिस्टर्स। पहला रजिस्टर है, दूसरा रजिस्टर है, ये मींस पहली मेमोरी लोकेशन है, दूसरी मेमोरी लोकेशन है। कौन सी मेमोरी लोकेशन है? किस मेमोरी लोकेशन से आप डेटा निकालना चाह रहे हैं, तो उस मेमोरी लोकेशन का एक एड्रेस होगा, और वो एड्रेस कितने बिट का होगा? जैसे 8085 माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड सिस्टम की बात करें तो 8085 है द 16 एड्रेस लाइन। सो हियर आई एम शोइंग फ्रॉम A0 to A15, A0 to A15, A0 to A15. This A0 to A15 address is applied across the memory or the input devices or the output devices. Suppose whenever we apply the address, after some time, depend on the access time of the memory, data will retrieve from the memory. The point is here, आपने एड्रेस अप्लाई कर दिया, लेकिन जो डेटा निकलेगा वो किस वायर के ऊपर ट्रेवल करेगा, कौन सी बस के ऊपर ट्रेवल करेगा? तो दिस वायर, जो हमने अभी बस की डेफिनेशन क्या दी, ग्रुप ऑफ वायर और बंच ऑफ वायर, तो जिस बस के ऊपर ट्रेवल करेगा, दिस इज कॉल्ड द डेटा बस. The most important thing is address bus is unidirectional. Why unidirectional? अब जरा थोड़ा सा ध्यान लगाएं यहाँ. Unidirectional का मतलब है address is always provided by the microprocessor to all peripheral devices. Peripheral में पहले वर्ड यूज कर चुका हूँ. Peripheral मतलब माइक्रोप्रोसेसर के अलावा जो भी कुछ कनेक्टेड है माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड सिस्टम है, उसका जनरलाइज नेम peripheral. All address is always applied by the microprocessor to the peripheral. Suppose एक एग्जांपल लेता हूँ so that you can understand the utility or your application of the addresses. For example, in a one class, only one student and one teacher is there. Now question is, क्या मुझे उसके नाम लेके उसको बुलाने की जरूरत होगी, या मैं जो बोल रहा हूँ अंडरस्टूड है वही सुनना होगा, और वो जो बोल रहा होगा मैं सुनना होगा? बट एट द another time, suppose 5, 10 or 20 or 30 students are sitting in the class and I want to interact with the one particular student, the name is required. But student at the same time, if a student want to interact with me, देन मेरे नाम बोलने की जरूरत होगी. नेचुरली अगर जो खड़ा होगा तो उसको जो भी पूछना होगा वो मेरे से पूछेगा, तो नो नीड ऑफ नेम. इन दिस एग्जांपल आई एम द माइक्रोप्रोसेसर एंड all the student are peripheral devices or maybe memory locations. So when I want to interact with the student, name is required, but if student want to interact, then no need of name. That means because I am single person are standing in the class, so I want to interact with the one student out of 30 students, then address is required. But at the another time, if only one student is there, no need to send the address. Whatever, एक पूरी कॉलोनी में एक पूरा सिंगल घर बना हुआ है, एक पूरी कॉलोनी में एक सिंगल घर बना हुआ है, तो वहां उसका एड्रेस कॉलोनी का तो होगा ही डेफिनेटली, लेकिन उसका रूम नंबर या मकान नंबर लिखने की जरूरत नहीं होगी. कॉलोनी का एड्रेस दे दें, दैट सफिशिएंट. जैसे एक हॉस्टल में एक रूम है तो हॉस्टल का नाम दे दें, दैट इज सफिशिएंट. बट उस रूम का नंबर डालने की जरूरत नहीं होगी. लेकिन अनदर टाइम अगर उस हॉस्टल में 100 रूम लगे हुए हैं तो 100 के 100 रूम के कौन से रूम में आपको जाना है हॉस्टल के,
उसका रूम का नंबर रिक्वायर्ड होगा, देन एड्रेस इज रिक्वायर्ड। तो कंक्लूजन क्या निकला, एड्रेस की मुझे जब जरूरत होगी व्हेन मोर देन वन डिवाइस इज देयर, इफ सिंगल डिवाइस इज देयर नो नीड टू सेंड द एड्रेस। इस एग्जाम्पल में इफ वन टीचर इज टीचिंग इन द क्लास, no need to send the address from student to the teacher, but if the teacher want to interact with the student then address or is required, name is required. And the another example, suppose two teachers are there, अब स्टूडेंट कौन से टीचर से इंटरेक्ट करना चाह रहा है, पहले से दूसरे से, देन एड्रेस इज रिक्वायर्ड। बट इन 8085 microprocessor based system, a single processor is there. So single processor means peripheral device doesn't send the address to the microprocessor. Peripheral device कभी भी एड्रेस माइक्रोप्रोसेसर को नहीं भेजेगा, जबकि ऑलवेज माइक्रोप्रोसेसर सेंड द एड्रेस टू द particular peripheral device or the particular memory location. That's why address bus is unidirectional. These lines are the output pin of the microprocessor and input pin of the all peripheral devices. But data bus is a bidirectional. Why it is bidirectional? Why it is bidirectional? Because when you want to store something to the memory in a particular memory location, which memory location, it is decided by the address. उस मेमोरी लोकेशन में मैं डेटा स्टोर करना चाहता हूं, मतलब डेटा का फ्लो कहां से होगा, माइक्रोप्रोसेसर टू द मेमोरी। इसका मतलब इन दैट केस डेटा लाइन आर द आउटपुट लाइन एंड मेमोरी की क्या बनेंगे, इनपुट लाइन। करेक्ट। अनदर टाइम सपोज मैंने एड्रेस अप्लाई किया एंड आई वांट टू रिट्रीव द कंटेंट। रिट्रीव मतलब मैं बाहर निकालना चाहता हूं डेटा को, उस पर्टिकुलर एड्रेस पर जो डेटा है उस डेटा को अगर मैं बाहर निकालना चाहता हूं, अब डेटा का फ्लो किधर से होगा, मेमोरी टू माइक्रोप्रोसेसर। तो मेमोरी की आउटपुट लाइन बनेगी और इधर इसकी इनपुट लाइन बनेगी। दैट्स व्हाई दिस डेटा बस इज बाई डायरेक्शनल। अंडरस्टैंड? थर्ड इज अ कंट्रोल बस। Control bus is used to send the control signal. What type of control signal? Suppose you apply the address. अब आपने अप्लाई तो कर दिया एड्रेस, अब क्या करना चाहते हैं इस एड्रेस पर, स्टोर करना चाहते हैं डेटा या डेटा को बाहर निकालना चाहते हैं। इन दैट सिचुएशन द टू सिग्नल्स आर रिक्वायर्ड, रीड बार और राइट बार। इफ रीड बार सिग्नल इज कनेक्टेड टू मेमोरी एंड आईओ डिवाइसेस, और सब जगह कनेक्टेड है, when read bar signal is there then उस एड्रेस पर कंटेंट को मैं रीड करना चाहता हूं। तो सच टाइप ऑफ सिग्नल, कंट्रोल सिग्नल, रीड बार, राइट बार, आईओ ऑब्लिक बार, such type of control signal are always travel through the separate bus. The name of this bus is control bus. So in any microprocessor based system, three type of buses are there: address bus, data bus, control bus. यहां हमने अभी कंट्रोल बस यूनिडायरेक्शनल दिखाई है, बट लेटर ऑन हम इसको कहेंगे कि ये बस बाई डायरेक्शनल होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बसेस। नाउ आई जस्ट कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन? इंस्ट्रक्शन जैसे सपोज आई एम गिविंग द इंस्ट्रक्शन टू यू, go to the market and purchase the vegetable. This is also kind of one instruction. But in a microprocessor based system, the proper definition of this instruction is a group of micro instruction. छोटे छोटे instruction, micro instructions के ग्रुप को कंबाइन करें तो इंस्ट्रक्शन बनता है। माइक्रो इंस्ट्रक्शन नया वर्ड आ गया, तो माइक्रो इंस्ट्रक्शन क्या होता है? माइक्रो इंस्ट्रक्शन इज ए ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑपरेशन। छोटे छोटे माइक्रो ऑपरेशन के ग्रुप को अगर कंबाइन करें तो माइक्रो इंस्ट्रक्शन बनता है। माइक्रो ऑपरेशन क्या होता है फिर? Micro operation is an elementary operation in which a particular bit or bits of the control word is oblique are enable or disable. What is the meaning? Suppose all in a microprocessor system, all the peripheral devices and microprocessor are connected. At the particular time, I want to enable the memory and I want to send the content of the memory to the microprocessor. At this
Same time, other peripheral devices are disabled because all the devices are connected with the buses. All the buses are connected with the IO devices, memory, and all interfacing chip. But at the particular moment, I want to enable only the memory and the microprocessor, or the internal block, particular block of internal block diagram of microprocessor. I want to enable that part. That is possible through the one particular word. Name of this word is control word. Control word have all the control signal. Sometime the particular control bit of control word in is enable, other are disable. Sometime two control bit are enabled, sometime more than two control bit are enabled, depend on the type of the instruction. For example, I just give the one example. One simple instruction is there. This is the 8085 instruction, assembly में दिया हुआ है. Very simple instruction. Move A, B. What is the meaning? A इसमें शो करते हैं हम, अभी आपको बता देता हूं, एक्यूमुलेटर, और B का मतलब है B रजिस्टर. ये दोनों ही रजिस्टर हैं, 8-8 बिट के रजिस्टर हैं. मूव द कंटेंट ऑफ B टू द A. B के कंटेंट को एक्यूमुलेटर में ट्रांसफर करो. A and B register are inside in the microprocessor. Inside in the microprocessor, many blocks are there. But when you want to execute this instruction, only कौन से मैं रजिस्टर को एक्टिवेट करना चाहूंगा? बी को एक्टिवेट करना चाहूंगा, बी को एनेबल करना चाहूंगा, और ए को एनेबल करना चाहूंगा. एंड बाकी सारी जितनी भी ब्लॉक्स हैं, बाकी सारी जितनी भी उसके डिवाइसेस हैं, बहुत सारी डिवाइस हैं, सी रजिस्टर, डी रजिस्टर, ई रजिस्टर, एच रजिस्टर, एंड एल रजिस्टर, इंटरप्ट आईओ कंट्रोल, सीरियल आईओ कंट्रोल, बहुत सारी डिवाइसेस. I want to enable only the B register and A register so that content of B will go to the A register. So control word में ये दो रजिस्टर को एनेबल करने के लिए कंट्रोल बिट्स हम भेजेंगे, बाकी सारी जितनी है उनको डिसेबल करेंगे. तो दिस इज कॉल्ड वन माइक्रो ऑपरेशन. ऐसे कई सारे ऑपरेशन होंगे, एंड दीज ऑल माइक्रो ऑपरेशन आर सिंक्रोनाइज्ड विद द क्लॉक सिग्नल. All are synchronized with the clock signal. आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा, clock is used to synchronize the devices. So we will discuss this micro operation in very detailed manners in the next lecture. But here you just understand this micro operation is an elementary operation in which a कंट्रोल वर्ड की कुछ बिट्स, या एक बिट या दो बिट या तीन बिट एनेबल होती हैं और कुछ डिसेबल होती हैं. जिन दो को एनेबल करना होता है वो डिसाइड किसके ऊपर होता है? कौन सा इंस्ट्रक्शन हम एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं. उस इंस्ट्रक्शन में हम चाहते क्या है? बी के कंटेंट को ए में मूव कराना चाहते हैं. बी के कंटेंट को ए में, तो बी और ए को एक्टिव करो, बाकी को सबको डीएक्टिवेट करो. सो दिस इज द वन एलिमेंट्री ऑपरेशन, एंड दिस एलिमेंट्री ऑपरेशन or the control word are synchronized with the clock, and one clock cycle period is called, एक और name बताता हूं, this is very important, T state. T state means timing state. This timing state का मतलब है one clock cycle period is called one T state. For example, suppose इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में मुझे 4 T स्टेट लगते हैं, 4 T स्टेट लगते हैं. 4 T स्टेट का मतलब क्या हुआ? मैंने अभी बोला T स्टेट का डेफिनेशन क्या दिया? वन क्लॉक साइकिल पीरियड इज कॉल्ड वन T स्टेट. इसका मतलब मुझे इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में कितना लगेगा? 4 क्लॉक साइकिल आर रिक्वायर्ड. सपोज मैं कहता हूं क्लॉक फ्रीक्वेंसी
क्लॉक फ्रीक्वेंसी इज 1 मेगाहर्ट्ज। तो क्लॉक का टाइम पीरियड कितना हो गया? 1/1 इंटू 10⁻6, 1 माइक्रोसेकेंड हो गया। And 4 T state is required to execute this complete instruction. That means 4 into 1 microsecond is required, that is 4 microsecond is required to complete this instruction. इसका टोटल एग्जीक्यूशन टाइम कितना होगा? 4 माइक्रोसेकेंड। इसका मतलब इफ यू इंक्रीज द क्लॉक फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड इज डिक्रीज, टाइम पीरियड इज डिक्रीज, दिस पीरियड इज डिक्रीज। इसका मतलब किसी भी माइक्रोप्रोसेसर की स्पीड, कई सारे फैक्टर होते हैं स्पीड बढ़ने के, एक बहुत बड़ा फैक्टर है क्लॉक फ्रीक्वेंसी। तुम्हें याद होगा पहले क्या 386 आते थे, 186 आते थे, 286 आया, 386, 486 आया, फिर P1 आ गया, पेंटियम 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, i3, i5, i7। इन सब में कंपेयर करें तो P1 में करीब 200 मेगाहर्ट्ज के आसपास क्लॉक हुआ करती थी। ये जो 8085 है इसमें 3.1625 मेगाहर्ट्ज 8085 का, और 8085 के एडवांस वर्जन की जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो 5 मेगाहर्ट्ज है। अब 5 मेगाहर्ट्ज से 200 मेगाहर्ट्ज हुई, अब आ रही है गीगाहर्ट्ज में। इसका मतलब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है टाइम पीरियड क्लॉक का कम होता है, और जैसे जैसे टाइम पीरियड कम होता है वैसे वैसे एग्जीक्यूशन टाइम हमारा कम होता है, और जैसे जैसे एग्जीक्यूशन टाइम कम होता है वैसे वैसे स्पीड बढ़ती है। टेक्निकली इसको बोलता हूं मैं थ्रूपुट ऑफ द मशीन विल इंक्रीज। थ्रूपुट ऑफ द मशीन विल इंक्रीज। थ्रूपुट मींस एक डेफिनेट टाइम में कितने इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है। अगर एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में 4 माइक्रोसेकंड की जगह 2 माइक्रोसेकंड अगर यूज हो रहे होते तो जस्ट डबल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता। एक घंटे में पहले अगर 100 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है तो 200 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता। तो थ्रूपुट ऑफ द मशीन विल इंक्रीज। अंडरस्टैंड? So this is all about the instruction. Now I'll just come over to the next topic. Instruction के क्या part है? Every instruction have the two part. One is the opcode, another is operand or address of operand. 8085 में opcode का जो size होता है 8 बिट होता है। opcode का मतलब क्या है? ऑपरेशन कोड ये बताता है यूजर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता है। इंस्ट्रक्शन का वो पार्ट जो मशीन को ये बताता है कि यूजर क्या ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट टेक द वन एग्जाम्पल, एक इंस्ट्रक्शन ले लेते हैं MVIA05H। हियर MV मीन्स मूव, I मीन्स इमीडिएटली, A मीन्स एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर पहले ही बता चुका हूं, इट्स ए 8 बिट रजिस्टर। 05H इज द ऑपरेंड डेटा। H का मतलब है हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है। मूव इमीडिएटली द कंटेंट 05H टू द एक्यूमुलेटर। अगर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूं तो इसका मतलब होगा 05H विल मूव टू द एक्यूमुलेटर। अब इस इंस्ट्रक्शन, दिस इंस्ट्रक्शन हैव द टू पार्ट, वन इज द ऑपकोड, अनदर इज ऑपरेंड। दिस MVIA क्या बता रहा है? मूव कराएं, इमीडिएटली मूव कराएं, एक्यूमुलेटर में इमीडिएटली मूव कराएं। दिस पार्ट क्या बता रहा है? क्या ऑपरेशन परफॉर्म होना है, किसको मूव कराएं? 05 को कराएं। तो 05H इज द ऑपरेंड। तो एवरी इंस्ट्रक्शन हैव द टू पार्ट, वन इज द ऑपकोड, दिस द ऑपकोड, एंड दिस इज द ऑपरेंड। ऑपरेंड मीन्स डेटा। अंडरस्टैंड? So move immediately content 05H to accumulator. The size of this opcode is 8 bit. इसका जो साइज हम जब इसको मशीन कोड में कन्वर्ट करेंगे तो इसका साइज होगा 8 बिट। इसका मतलब हाउ मेनी ऑपकोड्स आर पॉसिबल? 2 to the power 8। वेरी सिंपल। 256 इंस्ट्रक्शंस आर पॉसिबल इन 8085। ये अलग बात है कि 256 यूज नहीं होते, अब थोड़े से बढ़ गए। पहले जब स्टार्टिंग में थे
ओनली 216 इंस्ट्रक्शन यूज किए गए थे। एनीवे, सेकंड इज ऑपरेंड। ऑपरेंड इज क्लियर। यहां एक और लिखा है मैंने, एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड। समटाइम इन इंस्ट्रक्शन ऑपरेंड इज नॉट डायरेक्टली गिवन, address of the operand is given. For example, I just take this another example, STA2500H. Store, ST means store, the content of accumulator, A means accumulator, to the memory location whose address is 2500H. एक्यूमुलेटर के कंटेंट को उस मेमोरी लोकेशन में मूव करा दें या स्टोर करा दें। कौन सी मेमोरी लोकेशन? जिसका एड्रेस 2500H है। इसका मतलब 2500H इज नॉट द ऑपरेंड। ऑपरेंड इज कहां पर है? ऑपरेंड इज इन एक्यूमुलेटर। भेजना कहां है? डेस्टिनेशन कहां है? डेस्टिनेशन है मेमोरी। और 2500 क्या है? उस मेमोरी का जहां भेजना है उसका एड्रेस है। तो समटाइम इन इंस्ट्रक्शन ऑपरेंड इज गिवन, समटाइम एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड इज गिवन। द पॉइंट इज हियर, point is here, STA is the opcode. It is very clear because ये क्या बता रहा है? स्टोर कराएं एक्यूमुलेटर के कंटेंट को, दिस इज द ऑपकोड। कहां कराएं? डेस्टिनेशन मेमोरी में कराएं जिसका एड्रेस ही है, तो दिस इज द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड, एड्रेस ऑफ ऑपरेंड। एवरी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में दो मशीन साइकिल होती है। एक होता है OFC, ऑपकोड फेच साइकिल, ऑपकोड फेच साइकिल। मशीन को कैसे पता चलेगा क्या करना है? तो सबसे पहले ये जो ऑपकोड है ये मेमोरी के, और प्रोग्राम आप कहां बनाते हैं? प्रोग्राम आप रैम के अंदर स्टोर करते हैं, मेमोरी के अंदर स्टोर कराते हैं। जो भी प्रोग्रामर है, डिजाइनर है, वो अपना प्रोग्राम बना के मेमोरी में स्टोर करता है। तो माइक्रोप्रोसेसर पहले उस प्रोग्राम में सबसे पहले ऑपकोड को बाहर निकालता है और ऑपकोड को डिकोड करता है, और डिकोड करने के बाद उसको पता चलता है यूजर क्या ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाहता है। जैसे इस एग्जांपल में क्या था, एमवीआई में मूव कराएं इमीडिएटली एक्यूमुलेटर में, एक्यूमुलेटर में मूव कराएं। क्या मूव कराएं? इंस्ट्रक्शन की जो सेकंड बाइट है उसको मूव कराएं। 05 इज द अनदर बाइट। मैंने बताया था कि 8085 में कितना 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन होता है, 1 बाइट का सॉरी ऑपकोड होता है। और 05H को जब हेक्स में चेंज करोगे तो ये भी 8 ही बिट है। कन्वर्ट अगर करोगे 0000101, तो ये भी 8 ही बिट है। तो दिस इज द अनदर बाइट, 1 बाइट ये, सेकंड बाइट ये। मूव कराएं इमीडिएटली एक्यूमुलेटर में, तो सबसे पहले दिस ऑपकोड विल गो टू द माइक्रोप्रोसेसर। माइक्रोप्रोसेसर में जाएगा ये ऑपकोड, माइक्रोप्रोसेसर उसको डिकोड करेगा, डिकोड करके माइक्रोप्रोसेसर को समझ आएगा कि क्या करना क्या है। मूव कराना है इमीडिएटली एक्यूमुलेटर में। क्या मूव कराना है? मुझे ऑपरेंड मूव कराना है। ऑपरेंड कौन सा? मतलब सेकंड बाइट। देन माइक्रोप्रोसेसर रीड दिस सेकंड बाइट फ्रॉम द मेमोरी एंड स्टोर टू द एक्यूमुलेटर। तो इस ऑपकोड को मेमोरी से बाहर निकालने में जितना समय लगता है, दिस इज कॉल्ड ऑपकोड फेच साइकिल। और ऑपकोड फेच होने के बाद, डिकोड होने के बाद, इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में जो समय लगता है, दिस इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन साइकिल, एग्जीक्यूशन साइकिल। ऑपकोड फेच साइकिल इन 8085 माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड सिस्टम, 8085 में opcode fetch cycle have generally 4 T state, but some specific instruction also have the 6 T state. मैं T state का मतलब बता ही चुका हूँ। T state means timing state. Timing state is nothing that this is a one clock cycle period is called one timing state. इसका मतलब opcode will fetch from the memory and decode it in the microprocessor. It will require total 4 clock cycle period or the 4 timing state, but some of the instruction have the 6 timing state. Execution cycle depends on the type of the instruction. Execution में कितना समय लगेगा ये डिपेंड करेगा इस इंस्ट्रक्शन के टाइप के ऊपर। जैसे अगर मैं यहां बात करूं तो एग्जीक्यूशन में केवल एक इसको रीड करने के लिए 3 टी स्टेट की जरूरत होगी। ये बात और डिटेल में हम बात करेंगे।
लेकिन अगर इसकी बात करें तो पहले 00 रीड होगा, फिर 25 रीड होगा, फिर 2500 पे डेटा जाएगा। तो इसमें 10 टी स्टेट की जरूरत होगी एग्जीक्यूशन साइकिल। ये कैसे कैलकुलेट हुआ अभी इसके ऊपर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, वी विल डिस्कस लिटिल बिट लेटर। द पॉइंट इज हियर, opcode will retrieve in the opcode fetch cycle. How much time microprocessor will take in to retrieve the opcode from the memory? Generally, it is a 40 state in 8085 system, or some specific instruction also have the 60 state. After decoding this opcode, how much time is taken to execute this instruction? That cycle is known as the execution cycle. Understand? What will be the next topic? Type of the instruction. We will discuss this topic in the next lecture. Thank you very much.